if conditional statements. So in this we had seen first type only if, ठीक है, इसमें क्या था पलक, ओनली इफ कब यूज करते हैं? पलक यू देयर? हाँ, When we use only if? जब एक ही कंडीशन हो, हाँ, जब एक ही कंडीशन हो, क्या बोल रहे हो? जब एक ही कंडीशन हो। नहीं, ठीक से बताओ, फ्रेम प्रॉपरली। रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग। When there are more than two possibilities, when there are many possibilities in fact, and you are only interested in one of them, and one, then only you use. There is nothing like one condition. Okay, रिवाइज किया करो यार, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। Okay, so many possibilities, but interested in only one and ignore the rest. ठीक है, ये कब होगा? Many possibilities but interested in exactly two possibilities and corresponding action. Just a minute. Hello. Good afternoon. Sorry. Corresponding actions. The possibilities, when we are saying, it will be one in particular plus rest. इसका मतलब देखते हैं। If else. हाँ, yes, correct है विष्णुप्रिया, good. If else में क्या होगा? ये हम लोग देख चुके हैं, टू पॉसिबिलिटीज। अब देखो सिनेरियो, व्हाट डू वी मीन बाय टू पॉसिबिलिटीज, वन इन पर्टिकुलर प्लस रेस्ट, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? लेट्स से आई हैव प्रोग्राम है, write a Python program to accept a weekday name ठीक है, and
print I am happy if it's Sunday else print who cares। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है। सो हाउ मेनी सिनेरियोज आर यू एक्चुअली इंटरेस्टेड इन? देखो, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। यहां पे क्या है? पॉसिबिलिटीज मेनी। पॉसिबिलिटीज कितना है टोटल? 7 होगा। ओके, 7 नहीं, रादर 8। ओके, डेज प्लस 1 मोर, 8 पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, जो कि इनवैलिड केस होगा। इनवैलिड डे नेम, इनवैलिड नेम। तो rather we are not going into what is invalid valid, just to say कि 7 to 8 possibilities are there, right? कि 7 weekdays का नाम यूजर दे सकता है। फॉर एग्जांपल यूजर कैन गिव एनी नेम एज अ वीकडे नेम, फॉर एग्जांपल संडे, मंडे, कुछ भी दे सकता है। ओके, बट इंटरेस्ट किसमें है तुम्हारा? 2 में। इंटरेस्ट 2 पॉसिबिलिटीज। कौन सा 2 पॉसिबिलिटीज है? वन इन पर्टिकुलर। वन इन पर्टिकुलर क्या है? संडे प्लस रेस्ट ऑफ द डेज। यही है ना? इसमें से वन पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी से यू आर हैप्पी, बट फॉर रेस्ट एनी अदर थिंग आई डोंट केयर। ओके, एंड हु केयर्स? सो व्हेन आई से रेस्ट, इसका मतलब होगा या तो देर आर एग्जैक्टली 2 पॉसिबिलिटीज और द इंटरेस्टेड पॉसिबिलिटीज, और देर आर पॉसिबिलिटीज लाइक एक पर्टिकुलर है एंड नेक्स्ट एल्स, मतलब क्या? फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस। Okay, rest of the days, yeah, rest of the cases, any other action should be done. So for this, one corresponding action will be called as action 1, and this for rest other cases which is other than Sunday, there is action 2. So तुम देखोगे, so you are only interested in 2 scenarios, but there is one particular scenario that is Sunday, and other scenario that is there which covers the rest of the scenarios. ठीक है? So that is why I said कि we used it when there are exactly 2 possibilities, पर वो 2 possibilities ऐसे divided है कि there is one particular and there are one other else में बाकी हर other possibility को हम लोग else में डाल देंगे। ठीक है? So rest of the possibilities will be in the other types, जो particular का छोड़ के जो दूसरा होगा उसमें। So I'll write here, this is the particular one and this one is rest all other possibilities। ठीक है? ये मतलब समझ में आया? व्हेन आई से 2, but within 2 there will be one in particular and one everything else in other type, so wherein you will be doing second type of action। ठीक है? else थोड़ा ही बोलता है कि only for one particular case, else means for all other cases। always remember, else means for all other cases, for all other cases, that means for rest of the cases। It doesn't say only for the second type, it only says for rest of the types। ठीक है? ये याद रखना। तो therefore if else is used when you are interested in 2 possibilities wherein one you know specifically कि this condition will be met, and other one is if this is not met, for whatever is the other condition, rest of the cases you will go to the else part। ठीक है? इसका एग्जांपल देखते हैं। Let us see the example। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो answer to that previous question, ये वाला question. Write a program to accept a weekday and print I am happy if it is Sunday, else print who cares. ठीक है. For example, इसका answer. So how will you do? You will enter the day name, accept the day name from the user. Input. Please enter the name of the day. Priyanka, are you getting it? Please enter the name of the day. Then we'll write if day is equals to is used for comparison of the values. If okay, good. Just a minute. Hello. Good afternoon, ma'am. Anyways, कहाँ थे हम लोग? Right. So इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? If day is equals to Sunday, फिर क्या होगा? Print this is particular case, जिसमें you know कि what case you are interested in. Else means this is the second scenario, but this second scenario covers all other scenarios. इसीलिए this is the particular case and this is rest of the cases. But there are only two types. You have divided the entire possibility in two types. One is one particular and one is the other one. So number of possibilities that you are interested in is two, but there is one in particular and one is for all other types. Who cares? ठीक है? So did you get the gist? When to use if else? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर सर ये यूजर संडे कैसे लिखेगा इस पे भी डिपेंड करता है क्या? करता है, केस सेंसिटिव है पाइथन. अगर तुम्हें डाउट है कि कैपिटल एस से स्टार्ट करेगा तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इनकॉर्पोरेट हियर और टॉगल केस में डाल दे तो तब तो फिर मतलब देयर इज अ वे आउट. क्या कर सकते हो, देखो वो चीज अभी तुम यहां पे एक लाइन और लिख सकते हो. डे इज इक्वल्स टू डे डॉट अपर ही होता है ना, टू अपर होता है या अपर होता है, ऐसा करके जो हम लोग वो देखते थे स्ट्रिंग का इसका जो मेथड्स था. ठीक है, आई थिंक इट वाज टू अपर, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली अपर था या टू अपर. तो उस केस में क्या होगा, जिस भी केस में डालेगा वो डे अपर था बस, टू अपर था बस. ठीक है, ओके.
सो व्हाट विल हैपन, अगर मान लो यूजर ने संडे जिस तरह के भी केस में डाला, अपर केस, लोअर केस, मिक्स्ड केस, सेंटेंस केस, तुम्हारा टॉगल केस, वट एवर केस, बट क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू अपर फुल, और यहाँ पे सबको SUNDAY सबको कैपिटल में कर दो, ठीक है। उस केस में हर केस में मैच कर जाएगा तुम्हारा। नहीं तो एक दो केस ही अलाउ करना है तुम्हें, तो फिर देन व्हाट यू कैन डू इज, और day is equals to SUNDAY, और ऐसे करके लिख सकते हो। बट द बेस्ट वे इज कि डे को कन्वर्ट कर लो ऑल इन अपर केस, एंड देन यू राइट डे इज इक्वल्स टू S कैपिटल एन, मतलब ऑल इन अपर केस संडे लिख दो, देन फॉर ऑल द केसेस इट विल मैच। बट अगर दो तीन केस ही अगर तुम श्योर हो कि इस दो तीन में से यूजर विल नॉट एंटर एनी अदर टाइप, ठीक है, फिर तो तुम लिख सकते हो। समझ में आया पलक व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन? हाँ। Okay. So you can do this way also. Write a program, Python program, to accept two numbers from the user and print the bigger one. तो इसमें क्या करेंगे? How many possibilities are there? More than one. तब तो if use करेंगे. And how many are you interested in? So number of possibilities if you check. Possibility एक ही है प्रशांत, क्या बोल रहे हो? Possibilities इसमें 2 है. Why? Either first can be bigger or the second number can be bigger. Either first number can be bigger or second number can be. No, you are interested in both. कि या तो पहला बड़ा हो तो उसे प्रिंट करेंगे, सेकंड बड़ा हो तो उसे प्रिंट करेंगे. You are interested in both the scenarios. So interested in कितना? 2. ठीक है, 2 possibilities. First one is if first number is greater. And the second one is, first one is specific and second one is rest, but rest carries here only one possibility, but only one possibility. ठीक है, so it will fit under, that is second is greater. Let's say equal to वाला केस नहीं देख रहे हैं अभी, number won't be equal to two unequal numbers. Okay, so देखो, is it not fitting this type कि do exactly two possibilities, one in particular and other is rest, but यहाँ पे who cares, rest में तुम्हारा there is only one possibility, ठीक है, तो still it will fit in that. So you will write इसका आंसर में sorry, num1 is equals to float
input num2 is equals to float input. Okay, then you will write if num1 is greater than num2, print num1, else print num2. So here what you are doing, first case you are when num1 is greater, second case is when rest of the other possibilities, but other possibility is only that num2 will be greater. So here also only you are dealing with two possibilities, so you are used if and else structure. ये चीज समझ में आया कि when do you use if and else only? Primarily when there are two possibilities, okay, one in particular and one in general, one for the rest of the cases. It doesn't matter if the rest of the cases has only one obvious possibility, but the possibility should not your interested cases should not exceed more than two possibilities. It should be exactly two possibilities. If it is only then if exactly two, then you will use if else. यहां तक क्लियर है? That is this one and this one. If और if else clear है तुम लोगों का तो बताओ. I'll move ahead. Yes, sir, it's clear. Good. Ajay? Yes, sir. Yes, sir, clear. Good. ठीक है. Okay. प्रियंका समझ में आया ना? Hope you're getting it. Okay. Now let's say this was solution 1. I am writing another solution. Tell me, let me write first and then tell me which one will you prefer and why. Pretty much similar. This is the second scenario, second solution. Both are using the same logic, exactly same thing, slight difference. Here I am printing it whenever this num1 I find I'm sure num1 is greater, I print it there itself. Similarly, if I find num2 is greater, I print it there itself. Here what I do is when I find num1 to be greater, I don't print it, I store it in a variable. And then if I find num2 greater, then I don't print it there, I store it in a variable. And later on, after if and else block, I print it separately. So which one will you prefer and why? Question is, okay. Question is, which of the above two solutions? Sir, I will use the second one. Okay. My first. एक मिनट रुकिए. Which of the above two solutions will you prefer and why? Hello. Above two solutions will you prefer?
and y. Think of it, I'm coming in 2 minutes. There is a courier I need to collect. Yeah, कौन सा solution होगा? Should be used. I think Palak said 1. Abhishek बता रहा था 2. Yes. Others also may tell me. Ajay believes second one. बस 1 or 2 मत बताओ. Because as we have it in a variable, we can use it after the if and else statements. Wonderful. Abhishek, very good. नहीं Saurav. If you are writing a big program, your approach should be to save the result. ठीक है? Generally, I understand कि इसमें तुम्हें एक extra variable use करना पड़ रहा है. But the thing is कि it will be useful क्योंकि generally when you will be developing a program, you won't be writing 2, 3 or 4 or 5 lines. ठीक है? So in such cases, what you will need to store the results of any important computation or logical operation, ठीक है, or comparison. उस cases में you will store it in a variable so that they can be used later down in the program if required. ठीक है? I'll mention it. Second one is a preferred approach. Let's say मैं नीचे में there was one part of the question कि if and find the factorial of the bigger one. Somewhere down in the program, later down in the program or in the Python script, you get a requirement कि ऊपर में जो दो bigger number find किए थे, find which the factors or factorial or any other thing. Then तो फिर दिक्कत हो जाएगा. You will again have to write this logic if else wala. So it's better कि one time you compute and wherever you get the result based on that, try to capture the result in some variable. Okay. Approach as you will be able to store, able to use the result of the operation computation later down in the program
program as and when required. As and when required. ठीक है? Is this fine? ये समझ में आया concept? Yes. Okay. बताइए. कीर्तना, अकेला, विष्णुप्रिया, प्रियंका, अजय, बताओ. शशांक is there या नहीं आया आज? शशांक, you can reply if you have understood. चलो ठीक है. The last type का जो बच रहा है हम लोगों का, that is if else, if elif else वाला, उस पे डिस्कशन करेंगे and we'll solve few more questions. ठीक है? Based on if elif else वाले पे, we'll solve those questions or then we will wrap it up today. ठीक है? So next class you take a break of 15 minutes. We'll meet at 2. Okay, and then the last one, if elif else wala part, with some practice questions, we'll be doing in last around 45 minutes. Chalo, theek hai. We will meet after 15 minutes.